चांद सिफारिश जो करता हमारी, My favorite. देता वो तुमको बता, कुछ तो पहचान लो। Who Dawn या फिर You're My Love, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से। It's not just music also. I mean, everything. Today, I sometimes look back at the kind of clothes I used to wear in the 90s and, the kind of hairstyles, the kind of things. With age, you need to make those changes. And I've sung with almost all composers around that time. And हर composer के लिए मैं एक अलग singer था. I miss the music industry today. जितने गाने मैं पहले गाता था, जिस तरह से दूसरे दिन स्टूडियोज में जाना. आपको अगर कुछ करना है लाइफ में, मेहनत आपको करनी है. अगर आपको कोई मौका मिलता है ना, उसको genuinely accept करना है. उस मौके को गवा दोगे ना तो फिर बार-बार ये मौके नहीं मिलेंगे. Almost every year a part of some television show or the other. Sad songs बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो मैं मुस्कुराते रहता हूँ तो लोग बोलते हैं इसको sad song देकर फायदा नहीं. मेरे अपने चैनल पे गाना आ रहा है, आती है तो वेलकम, जाती है तो वेलकम. KK was the last guy in Stress. We had a wonderful time together. कोई एक मेमोरी उनके साथ? हमारी दोस्ती पर ही गाना करता हूँ. यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है. तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ और बहुत कुछ करना है. Thank you so much for making time for India Podcast. I think I've been looking for it for a long time now. Even when I was doing the research or reading about, because I've been your diehard fan from my early days, and now getting an opportunity to talk to you is really special. But I didn't know Shantanu Mukherjee. I always knew Shaan. So what is this Shantanu Mukherjee? Because I was like, this is your real name, but we have always known it Shaan. So how does this go with you? How much do you remind yourself? No, I'm Shantanu Mukherjee. That's my name. That's my official name. And that's my name in school. Though in school it was spelled without the H. So in school everyone called me Santanu. Being in a typical Jesuit, common school, without the H, they never realized that Santnu would actually mean Shantanu. Yes. Then in Maharashtra, Shantanu is a very popular name. But they pronounce it as Shantanu. 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 I've heard Santanu, not the way but not Shantanu. Yeah. Shantanu to typically Bangali. Then Bangali. Shantanu is again probably more, something. But there it goes Shantanu. So anyway, I have a lot of variations. But yeah, Shaan was the farthest from it. That happened because of a wonderful gentleman called Bidu. Okay. Bidu, I'm guessing his name was Bidappa. But जब से उनके नाम को उन्होंने काटा है तब से लोगों के नाम को काटने में उनका बहुत ज्यादा शौक है. तो शांतनु को शान कर दिया. तो ये शान आपने किया कि ये इंडस्ट्री में आते आते अपने ही शान बन गया? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ बिट्टू जिन्होंने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए या फिर डिस्को दीवाने के जो कंपोजर है लंदन बेस्ड जो म्यूजिक डायरेक्टर थे बिट्टू हैं. उन्होंने कहा कि ये एक तो ये लंबे लंबे बाल, फिर ये सागरिका, शांतनु, ये कहाँ से आ गए इतने लंबे लंबे नाम लेके. तो पहले तो उन्होंने कहा था कि सागरिका का नाम वो साग कर देंगे. ऐसे नहीं वो तो कोई सब्जी बन जाएगी, ऐसा मत कीजिए. तो फिर उन्होंने कहा कि चलो फिर शांतनु से तुम्हें शान बना देते हैं. So I said Shaan sounds nice, so I stuck with Shaan. That's so nice, huh? You got a new name now. It's like Shantanu for family and friends, but Shaan for the world. That is totally. Shaan, I want to know one more thing. I'll call you Shantanu or Shaan. Sorry. So I want to know one thing before we go talking more about your life, your journey, your career, is your smile. I mean, how do you maintain this? Because amongst all the singers in the country, I think you're one who has always been known as a smiling person, smiling singer. आप कोई भी अपना वीडियो उठा लीजिए, कोई भी singing stage, कोई भी genre का गाना भी. I mean, even if you're singing something which is a little sad or slow, the smile never goes. Is that conscious effort or you are a happy soul? No, I mean, just today I've released a song called Abhija. It's a very sad song. वो बेचारा कह रहा है कि प्लीज तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी बेजार है, बेवजह है, आ भी जा. लेकिन वहां भी अब मैं वीडियो देख रहा हूँ और वहां भी फॉर स्ट्रेंज चीज मुझे तो लग रहा था कि मैं बहुत सीरियस लुक दे रहा हूँ लेकिन चेहरे पे स्माइल है. सो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम. It's not a problem. नहीं, आई थिंक
Yeah, people. I mean, yeah, I think to be more honest, I've got a lot of reasons to smile, and even when I'm feeling a little low, I think if I smile, I can get my mood back. I like to stay positive. I like to stay happy. I like to spread happiness. So smiling is one of the easiest way to do it. Then there's music. So I think I'm trying to use both to Yes. bring Can we happiness. have this one line from the new release? You just said that, so I had to bring it right away. Oh, sure, 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 sure. So um, अभी जा जिंदगी बेवजह है अभी जा मेरे दिल के खुदा अभी जा मुंतसिर ये समा है ख्वाबों से चल के अभी जा ख्वाबों से चल के अभी जा So, song is actually composed by Gaurav Dasgupta, and we did a lot of work together. As Gaurav is from Calcutta, from your Yes. city, and a fantastic guitar player, and so and it's written by Rajesh Manthan, someone I've worked with a lot over the past many years as a wonderful, wonderful lyricist. तो बहुत जल्दी जल्दी गाना बन गया और फटाफट रिलीज हो गया. I think आजकल गाने बहुत जल्दी बनते हैं. I don't know. I want to come to this, but before I should tell you, आप smile करते, but when you sing, I think we also smile. So it's not just you. तो ये energy transfer होती है. That's why you keep. आप भी तो स्माइल कर रही है, मैं तब से आपको देख रहा हूँ. Your मैं smile just आपको देख के doesn't leave your स्माइल करी, मैं face. इतना स्माइल नहीं करती. So you are having contagious energy. But coming to your music journey, Shaan, you have seen the industry, I think I can't even say how many decades, but you've seen it transform and you have transformed with it. मतलब अगर आज हम बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी भी गाना बनता है, I think Shaan was the one who's come with the best of the when we say Bollywood as a term, Bollywood singer, it stuck with you. There was no such thing as Bollywood singer. You're a cross generational person, right? So how has this journey been for you? Has it been a new chapter every time? Consciously you have to prepare for it? और कितना easy पहले था और कितना difficult है? जैसे आपने कहा कि चेंजेस आई हैं और चेंजेस के साथ आप सही कह रहे हैं कि मैंने भी खुद को थोड़ी बहुत कुछ हद तक चेंज किया, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर आप किसी चेंज को एक्सेप्ट ना करें, उसे आप सिर्फ निगेट करें, कहें कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, हम जब थे सही था, वैसा ही सही था, और ये सब क्या बकवास है, तो फिर वो आप भी डेटेड से हो जाएंगे. आप उस अगर किसी को कोई चीज अच्छी लग रही है, तो वो क्या चीज है जो अच्छी लग रही है, तो वो आपको डेफिनेटली छान के निकालना है. और जो चीजें आपको उसमें सही नहीं लग रही है, आपको उसे नहीं करना है. बट देयर इज डेफिनेटली समथिंग गुड दैट इज हैपनिंग with the new generation, with the new kind of music, and that you have to filter out, and that you have to imbibe in yourself. It's not just music also. I mean, everything today, you know I sometimes look back at the kind of clothes I used to wear in the 90s, and the kind of hairstyles, the kind of things. With age, you need to make those changes. You can't be stuck in one zone. Not in life, not through music, not in relationships. You have to evolve. अगर इंसान ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो इंसान तो है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. So I believe in constant evolution, but it's a very natural process for me. There is no forced कि मतलब 2 हफ्ते तक ऐसा रहूंगा, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर मैं ऐसा हो जाऊंगा, और फिर व्हाट्स इन, व्हाट्स आउट, व्हाट्स ट्रेंडी, व्हाट्स नॉट, उस पर पूरा फोकस डाल के खुद को चेंज करता हूँ. इट हैपेंस नेचुरली. if you're not a very rigid person, then I think it can happen very naturally, and that's what's happening with me. And फिटनेस का जहाँ तक सवाल है, बस यही है कि एक पॉइंट पे मैं मतलब I was 32 when I entered the gym for the first time in my life. Are you serious? मुझे वो ऑफ कोर्स स्कूल में मैं एथलीट था, सारे स्पोर्ट्स खेलता था, तो आप मोर अ स्पोर्टिंग पर्सन बट एन आउटडोर पर्सन. वो जिम में जाके वेट्स करना मुझे बहुत अजीब लगता था. लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वाइफ got pregnant again for the second time. पता नहीं कैसा हो गया, लेकिन जो भी है. तो she had already paid up for a trainer. तो कही कि अभी इसका क्या करे, तभी तुम करना शुरू कर दियो, तुम करो ये वर्कआउट. तो उस चक्कर में मैं शुरू किया वर्कआउट करना. फिर वो क्योंकि वो होम जिम टाइप का एक सेटअप बन गया, सो आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट. नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल शुरू तो करते हैं, लेकिन वो जिम जाना, उसके लिए जिम के कपड़े, फिर वो पार्किंग, फिर ये वो लोग परेशान हो हम जाते हैं. टालते रहते हैं, नहीं जाते, कल चले जाएंगे. हाँ, लेकिन क्या है कि ये घर में जब जिम है ना,
और फिर वो आ जाते हैं सुबह सुबह आपके ट्रेनर, Oh फिर आप God. उसको कैसे टाले, हो तो खड़े रहता है आपके सामने, नहीं 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 उठो चलो करो। तो उस चक्कर में हो गया है, वरना आई एम नॉट अ वेरी डिसिप्लिन्ड और वेरी कहते हैं ना फिटनेस क्रेजी काइंड ऑफ अ पर्सन, बट वो लाइफस्टाइल में आ गया। I think we should thank Radhika for that. यस Yeah. यस, एंड Firdaus माय ट्रेनर। But before I get to your music, I want to know a little bit on your journey before becoming Shaan. How is Shaan as a person changed? आपका बचपन कैसा रहा है? Do you have any anecdote to share? कोई एक moment जो आपको लगता है आज भी मैं पीछे घूम के देखूं तो ये तो is the real Shaan, which defines Shaan कौन है, you know, as a child, very simple or very outgoing, या हमेशा से सपने देखते थे बड़ा बनना है, फेम चाहिए? What नहीं, was मैं it? हमेशा पल में ही रहा हूँ, कभी बचपन से ऐसा कोई बड़ा सपना था कि कुछ ये करना है, बहुत खुश था, वेरी हैप्पी इन माई स्किन, जैसा भी जो भी चल रहा See, I है। told you you're a happy person. कभी दोस्तों के साथ हूँ तो भी खुश हूँ, अकेले भी हूँ तो भी कुछ ना कुछ कर लेता था। किसी पत्थर के साथ फुटबॉल खेलते खेलते भी 3-4 घंटे निकाल लेता था। अकेले अकेले कमेंट्री भी दे रहा हूँ, ये मैंने रिवील कर दिया, ये कर दिया। सो आई वाज वेरी हैप्पी इन माय ओन कंपनी, ऑलवेज बीन दैट वे। और बट ऑफ कोर्स कोई एम्बिशन खास नहीं थी, ना ही कोई ड्राइव या कोई फोकस उस तरह की थी। मैं मुझे एक एक वाकया याद आ रहा है कि मैं तभी स्कूल में मजाक मस्ती में कैप्टन बन गया था, मेरे मेरे ग्रीन हाउस का मैं कैप्टन था। और स्पोर्ट्स डे में मेरे हाउस की मार्चिंग में, जहाँ सबके पास एटलीस्ट 25-30 उससे भी ज्यादा 40 आई थिंक बच्चे होने चाहिए मार्चिंग के लिए, तो मेरे पास कुछ ऐसे 15-20 आए थे। और तो मेरे जो प्रिंसिपल थे मुझे बुलाकर बहुत डांटे, मैं तो रो ही दिया था। बोले तुम क्या सोचकर ये बन गए, तुम्हारे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। तो वो दिन, और फिर आई टर्न्ड अराउंड एंड कुछ ना कुछ करके हमारा जो हाउस था 11 सालों से कभी स्पोर्ट्स डे नहीं जीता, और उस साल हम स्पोर्ट्स डे जीत गए। मैंने बहुत सारे मेडल्स जीत गए मेरे अपने हाउस के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आई कि अगर कुछ करना है लाइफ में, मेहनत आपको करनी है, आपको फोकस रखनी है, और आपको बहुत ही एक जेन्युइनली, अगर आपको कोई मौका मिलता है ना, उसको जेन्युइनली एक्सेप्ट करना है। उस मौके को गवा दोगे ना तो फिर बार बार ये मौके नहीं मिलेंगे। और उस दिन से, ऑफ कोर्स इट वाज वेरी यंग टाइम ऑफ माय लाइफ टू लर्न माय लाइफ लेसन, प्रॉब्ली आई वाज जस्ट 14 और 15। हाँ. लेकिन उससे बाद आई काइंड ऑफ स्ट्रेटन अप क्वाइट अ बिट। तो जब भी कोई मौका मिलता है, मैं एक तो ना नहीं कह पाता, मैं हर चीज को हाँ ही कह देता हूँ। और जब वो मिलता है तो फिर मैं पूरी तरह से उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। नो हाफ मेजर्स, नो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स, करो तो पूरी तरह से करो, वरना मत करो। So nice. I don't know. You're a yes man. I think girls would have been lucky कि would have known this about you. So they could have approached like, this is a yes man. You would never say no. This सबको did यस not नहीं कर come पाऊंगा out. भाई। मैंने बहुत जल्दी किसी को यस कर लिया था, तब से बस आई एम होम मैन। बट Yeah, इन totally. थिंग्स दैट आई कैन, आई स्पेशली जैसे म्यूजिक में कई लोग कहते हैं कि हर तरह के गाने गा देते हो, ये कैसे होता है? हाँ. तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई कोई किसी गाने के साथ मुझे अप्रोच किया है तो उन्होंने भी कुछ सोच के ही किया होगा कि चलो ट्राई करते हैं, शायद शाम कुछ अलग कर देगा। तो मैंने कभी भी किसी गाने को ना नहीं कहा। ऑफ कोर्स लिरिकली कोई गाना बहुत ज्यादा मुझे उस तरह के गाने वैसे मिलते भी नहीं, बट इफ दे आर लाइक रियली रियली टेरिबल देन आई वुड अवॉइड सिंगिंग सच सॉन्ग्स। बट अदरवाइज genre wise I love to sing any and every kind of song, I attempt at least। और सेम वाइज कि गाना कौन सी बड़ी फिल्म का है या फिर किस पर पिक्चराइजेशन है, आई डोंट रियली बॉदर विद दोस थिंग्स। मुझे सबसे मजा आता है माइक के पीछे जब मैं गाना गाता हूँ। तो जब इतना मजा मिल रहा है तो फिर बाकी चीजों के बारे में क्यों सोचे। आपको एंजॉय नहीं द। फर्क पड़ता कि who is the actor? I need to know who am I giving my voice to? नहीं नहीं, पैसे भी कम दे रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। No, but Shan, this I want to know. Now the recognition to the singers is much higher than the time you started off. You've been a television face, so मैं आपके लिए recognition कभी, I don't think you've been in short of that right from your beginning. You have been the most recognized face. Now you're good looking, so I had to say that. So that added more that I think people wanted to bring you up. But the singers did not get that kind of a recognition or label right in the initial days. वो आते आते शायद आप कुछ singers के साथ वो था, but अब बहुत strong recognition है because of platforms या individually singers को जानते हैं, हम awards मिलता है. And you're not just the name behind the actor कि इस actor के पीछे इन्होंने आवाज दी. So how have you been able to understand this thing कि singer is no more limited, they have their identity today. खाली बैकग्राउंड सिंगर नहीं कहलाते या बॉलीवुड सिंगर नहीं है.
जी, क्योंकि बॉलीवुड सिंगर बनने से पहले मैं ऑलरेडी एज अ पॉप सिंगर आया था, तो वीडियोस में खुद फीचर करना, अपने शोज में जाके नॉट जस्ट सिंग बट परफॉर्म, तो वो सारी चीजें हमें करनी थी, क्योंकि हम जो गाने गाते थे कोई फिल्म के साथ वो सपोर्ट नहीं था। तो दे वर मच स्मॉलर सॉन्ग्स कंपेयर टू शानुदा, उदित जी, वो जो गाते थे तो लोग शाहरुख खान समझकर एंजॉय करते थे उन गानों, या मुझे खुद शाहरुख खान बन के परफॉर्म करना होता था। तो कहीं ना कहीं टू हैव अ फिजिकल प्रेजेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो उसलिए थोड़ी बहुत खुद को ग्रूम करना, या फिट रहना, टू बॉदर अबाउट माय लुक्स वाज इम्पोर्टेंट, बिकॉज फाइनली अगर आप किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, आप स्टेज पर हो, सो यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, नॉट जस्ट वोकली बट आल्सो फिजिकली। साथ साथ टेलीविजन मेरे लिए एक बहुत ही अगर ये टेलीविजन नहीं होता, आई थिंक नाउ ओवर 25 years I've been almost every year a part of some television show or the other. इस साल और कुछ नहीं मिला तो मिक्का दी वोटी कर लिया। बहुत मजे लिए। We had a great time. So every year from I think 1996, जब से मस्त मस्त शो एक शुरू हुआ था एलटीवी पर, वो चैनल अभी बंद हो गया है। उसके बाद बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारे शोज किए, होस्ट किया, जज किया, मेंटोर किया, डांस कर लिया, कुछ अलग अलग उटपटांग से भी शोज किए। बट आई एंजॉय टेलीविजन, आई एंजॉय बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा में। एक आध कुछ बहुत ही वाहियात फिल्में भी की जो बहुत बुरी तरह से पिटी भी, पर आई एंजॉय डूइंग मेनी अदर थिंग्स, नॉट जस्ट कि बस मैं सिंगर हूँ तो मैं बस गाना ही गाऊंगा। एंड शायद इस वजह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मुझे पहचानते हैं, लेकिन आई थिंक 90% would want to know me as a singer. Yes. But a lot of people think of me as a television. शुरू में बहुत आता था, ओ देखो 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 सारेगामापा अंकल जा रहे हैं। Like a brand ambassador there. हाँ, माँ अपने बच्चों को बताती है, देखो 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 सारेगामापा अंकल जा रहे हैं। So I wonder what a funny name this is, सारेगामापा अंकल। But Shaan, coming to the new culture, I think अभी आप तो promote किए हैं talent, you've hosted shows where talent have been recognized. It's like singers are born every year, and it's like a pool of them. And plus the rap culture, the demand of the new generation, the remixes. Where do you fit yourself? You think it's going fine? सबके लिए जगह है, and or do you have to change your own choice of songs, because the rap culture genre remixes are demanded by the youngsters, the Gen Z or the boomers, however you look at it? देखिए, हमारा जो जनरेशन था, आई थिंक दैट वाज द लास्ट ऑफ दैट टिपिकल, जैसे आप कह रहे थे ना बॉलीवुड वाली वॉइसेस है। तो हमारे हीरोज कभी रोमांटिक गाने गाते थे, कभी आइटम गाने गाते थे, कभी इंटरनेशनल स्टाइल के गाने, कभी एकदम देसी वाले गाने। तो हमें काफी सारे जॉनर्स की एक अच्छी दखल थी किस तरह से इसे गाना है। लेकिन today if you look at it, most of the singers have their own distinct style. True. And their own 2 or 3 genres. Of course there is Arijit, there are some amazingly versatile singers today also, but most of them are happy doing that typical एक जोन में वो गाते हैं। जब भी वो जोन की जरूरत होती है तो कुछ सिंगर्स है सो सिर्फ सूफी टाइप के गाने गाते हैं, कुछ है जो सिर्फ रॉक टाइप के गाने गाते हैं। Specific. जी जी जी। तो अब उनमें से अगर कोई रैपर है तो ये नहीं कि अब मुझको रैप भी करना होगा, अब अगर कोई वो कर रहा है तो मुझे वो भी करना है। तो सब आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर फोर्टे, एंड उसमें इफ यू कैन क्रिएट इनफ वेरिएशंस, देन वो बोर्डम नहीं आएगी आपकी आवाज से। तो मैं इतने सालों तक अभी भी कुछ नया जॉनर इसलिए ट्राई करता हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार ये टिपिकल वो शान का वही गाना है जो गाते आया है पिछले 25-30 साल से। तो उसलिए कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट कोशिश करता हूँ। बट ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू, जो कुछ भी करता हूँ पूरी जद्दोजहद के साथ, के लगे कि आई एम नॉट फेकिंग दैट स्टाइल और दैट जॉनर। तो अगर रैप भी करूंगा तो आई एम श्योर। But did you have to fight a period जहाँ आपका एक इमेज बन गया था और उसको तोड़ना पड़ा, या किसी एक्टर से एसोसिएट हो गए, या शान इज रोमांटिक सिंगर, ही लुक्स रोमांटिक, ही इज रोमांटिक, ऐसा कुछ बना था फेस? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स ज्यादातर गाने तो रोमांटिक ही बनते हैं। और क्योंकि रोमांटिक गाने मैं थोड़ा वो एक रोमांस के साथ गाता हूँ तो ज्यादातर वही गाने मिले हैं। लेकिन साथ साथ हाँ, सैड सॉन्ग्स बहुत कम मिलते हैं क्योंकि वो मैं मुस्कुराते रहता हूँ तो लोग बोलते हैं इसको सैड सॉन्ग देकर फायदा नहीं। तो लेकिन देयर वाज नो रियल, बट ट्रस्ट मी यू हैव डन ग्रेट वंस। बहती हवा में आई कैन क्राई इवन नाउ, like that. But it's not a sad song. It's not तो of sad, course it's it's a touching. nostalgic, हाँ एक nostalgic गाना। सैड सॉन्ग किया एक तो बहुत ही ज्यादा सैड, जहाँ सबकी सब लाशें पड़ी हैं वहाँ। ये क्या हो गया रामारे, ये क्या हो गया रामारे, कांटे में एक फिल्म शुरू में ही आई थी एक ऐसा गाना जहाँ सारे मेरे फेवरेट एक्टर्स सब जमीन पर पड़े हुए हैं
shot themselves. Anyway, तो तो हाँ, तो luckily for me, हाँ, कुछ उस तरह का effort करना नहीं हुआ. And I've sung with almost all composers around that time, and हर composer के लिए मैं एक अलग singer था. कोई कहता अरे यार ये गाना जो है ना, ये टिपिकल शान गाना है. फिर कोई एक अलग ही गाना बोलते, नहीं ये टिपिकल शान गाना. तो मैं समझ नहीं पाता था टिपिकल शान गाना क्या है. But I thank all of them for experimenting with my voice, giving me different kinds of songs. जैसे कहा एकदम वो निकम्मा किया, वो भी किया एकदम. या आइटम गाने भी किए हैं. फिर जब से तेरे नैना, उस तरह के भी सॉफ्ट इंडियन स्टाइल के गाने किए हैं. बहती हवा, चार कदम. So really enjoyed singing all kinds of I think you've songs. been versatile. It was wrong of me to say that. I think you feel it and you've done it all. बस आप smiling human being है. That's about it. I have one small game for you. Now, this जी. is about these are words and your thought about it. As quick, as short as you want. So, first thing, what do you think about this whole thing of age shaming? Do you think that exists? I think it exists, and I need to be age shamed a little bit. मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जरा रिमाइंड करें कि इस साल में पूरे 50 का हो जाऊंगा, क्योंकि I just don't feel it, so I need to be told. You But don't no, look people like give me a lot of also. love and respect, and I don't see age shaming happening. But people should age gracefully, I believe. कि हर चीज की एक वक्त होती है, और एक वक्त के बाद अगर आप वही टीनेजर बन के आप जीने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं you should bring in grace in whatever you do. That's so amazing to know it that way. Fame. What do you understand by fame? Temporary, fleeting. Has it been so for you? I thought it stayed with you throughout. Yeah. No, fame is something that that feeling can't stay with you. Even if वो फेम की जो एक राइज होती है, और उसके बाद वो स्टैग्नेंट होता है, और उसके बाद फिर वो फेम नहीं होता. आपको लगता है आप फेमस हो? आप सुबह उठ के सोचते हो मैं शान हूँ, या कि कोई ना कोई फील कराता है और राधिका प्लेज अ ग्रेट रोल इन सेइंग तुम नॉर्मल? No. In fact, I think thanks to Radhika, to my family, my friends, कभी मैं फेमस हूँ ये फील आती नहीं है मुझे. और कई बार ऐसे हम लोग, मैं एक्चुअली होता है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है और मैं कहते क्यों मुझे घूर रहा है. बोले अरे वो पहचान गया है तुम्हें. तो फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है, अरे हाँ. बट या आई लाइक टू स्विच ऑफ. when I'm on stage, जब I have to perform, I have to do the whole शांत थिंग, तब कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर शांतनु बन जाता हूँ. You come out of it on your own. आपको ये कैरी नहीं होता कि मैं अब बहुत बड़ा बन गया हूँ, I've earned it all. ऐसा कुछ रहता है? नहीं, You are अगर able to अगर कुछ disconnect. रहता है मन में, अगर कोई उस तरह की बात है, तो यही है कि बहुत कुछ करना है. I still have not achieved what मुझे लगता है कि मुझे जिस तरह की एक फैमिली बैकग्राउंड मिली, सपोर्ट मिला, माय फादर बीइंग इन द इंडस्ट्री, माय मदर बीइंग इन द इंडस्ट्री, बम्बई में इतने सारे लोग, जान पहचान, साथ साथ health wise I've always touch wood had good health, and a good family support now, wife, children, friends. तो कोई और मेरी जगह बहुत और कुछ कर सकता था, बहुत ज्यादा कर सकता था. और तो मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ और बहुत कुछ करना है. So what does success mean for Shaan? Lot of gratitude, lot of success. तो आपके हाथ में होता नहीं है. सक्सेस एक चांस की बात होती है. बहुत गुणी लोग हैं जिन्हें सक्सेस नहीं मिला. बहुत सारे जिसे कहते हैं कूड लोग हैं जिन्हें बहुत सक्सेस मिला है. तो never let success go to your head, but of course have a lot of gratitude कि आपको ये मिला है. तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार होना है, आभारी होना है लोगों का. So keep your head And down. family. What does family mean to you? Family is priority, it's top priority. Always आपके been? जो अपने हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. फैमिली आपका उस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम है जो आप टेक इन फॉर ग्रांटेड करते हैं कभी, बट यू ओनली रियलाइज देयर प्लेस इन योर लाइफ when they're not there. Or what my mother has been for me, I may have not realized then. Of course, I did realize then, and I've always lived with my mother. But now that she's gone, I know what I'm missing. I know what is कहीं इतना खालीपन जो है. तो मैं वही कहूंगा लोगों को कि जब तक आपकी फैमिली आपके साथ है, वो है, मतलब दुनिया में है, तो उनको पूरा साथ दो, उनके साथ आप रहो, क्योंकि यू नेवर नो कल क्या है. बट डोंट इग्नोर फैमिली.
When Don't it comes neglect to that. family, I have to talk about your relationship goals with Radhika. I think the most celebrated couple also. People quite like this. Even whenever I search around, you guys are like the relationship goals hashtag. So what is that relationship goal you guys have set? Was it conscious? What's the story like? No, Because आज की we just जनरेशन में यही प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप cannot be managed. नहीं, हम लोग दोनों थोड़े मजाकिया टाइप है, दोनों थोड़े से पागल है, और दोनों एक दूसरे की ह्यूमर बहुत ज्यादा समझते हैं। लोग समझ नहीं पाते हम किस बात पे हंस रहे हैं, क्यों हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ हमारी मस्तियां नोक झोंक चलते रहती है। हमारी एनर्जी लेवल्स अलग भी हो, लेकिन हम कभी भी वो जैसे कहते हैं ना, स्पेस वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं लाया कि Wow. आई हैव माय सेट ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव योर सेट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव माय रूल्स, you have your rules. Whatever rules it applies to both, everything is in a common space, and within that, कभी अगर मुझे अपना दिल थोड़ा सा तोड़ के या दिल को मार के उनके लिए कुछ करना होता है, तो I'll do it without even blinking my eye, and of course she will do the same. I wish So I think Radhika was here. I would have played a game. I would have known the truth. But yeah, next time when story I'm है. shooting you, I'll call her around and make sure that it's with Radhika. Sure, sure, sure. We've done a lot of interviews Yeah. together, and actually ज्यादातर हम लोग जब इंटरव्यूज करते हैं, तब जब लोग सवाल पूछते हैं, तब थोड़ी सी एनालाइज करते हैं हमारे रिलेशनशिप को, और तब जाके ये बातें सामने आती है कि शायद दिस इज द रीजन, दिस इज आवर सीक्रेट. लेकिन otherwise there's no real effort that we put in. We just make sure that we never feel that distance. We're always What do you together. miss, Shaan, in the music industry today? Is there anything you feel like I wish ये होता जो था या? I miss the music industry today. Oh my God. You think it's क्योंकि हाँ, gone? जितने जितने गाने में पहले गाता था, जिस तरह से हर दूसरे दिन स्टूडियोज में जाना, अलग अलग कंपोजर से मिलना, अलग अलग म्यूजिशियन से मिलना, वहीं जाकर गाने को सीख कर गाना. ऑफ कोर्स आई हैव माय स्टूडियो एट होम, और मैं रोज Yeah. नए गाने बनाता हूँ. आज भी जैसे आपको पता है, गाना निकला है एक और, बाय द एंड ऑफ द मंथ एक और बहुत बड़ा गाना आ रहा है विद सारेगामा. उसके बाद मेरे अपने चैनल पे ही गाना आ रहा है, आती है तो वेलकम, जाती है तो भीड़ कम. टपोरी टाइप का गाना है. I know it's the तो most commonly used line, no? हाँ, आई थॉट इस पर कोई गाना क्यों नहीं बना, तो मैंने बना दिया. तो बहुत मजेदार गाना है. इट्स विद यंगस्टर्स, दे आर ऑल वेरी कूल. जो इन्फ्लुएंसर यंग ब्रिगेड के साथ मैंने वीडियो बनाया. तो इस तरह के गाने तो बन रहे हैं, लेकिन हाँ, आई मिस वर्किंग विद माय फेवरेट कंपोजर्स, बीइंग इन दोस बिग स्टूडियोज, गेटिंग अ ब्रीफ अबाउट द एक्टर्स एंड थिंग्स लाइक दैट. सो बट ऑफ कोर्स आजकल वो सारी चीजें शायद उतना होती भी नहीं है. पीपल आर वर्किंग आउट ऑफ देयर ओन होम स्टूडियोज. आपको गाना दे दिया जाता है, आप गाकर भेज देते हो, फिर उस पे if they want some changes they get back to you, then you so सब isolation में काम हो रहा है. I miss that. Exactly. I It's miss so everyone coming isolating. together. Isn't it isolating? Loneliness नहीं हो गया इंडस्ट्री में? हाँ, I think हर कोई अपने convenience में काम कर रहा है, लेकिन that convenience somewhere is causing a certain lack of collective energy. और collective energy में एक जादू होती है, एक मैजिक होती है, एक अलग किस्म की एक ग्लू नशा होती है, जिससे चीज और खूबसूरत बनती है. तो वो चीज मिसिंग है for sure. You're your father, so how do you look at your kids? Is there a generation gap or you manage it? No, I think I've been फिर कहूंगा कि I've been very lucky as parents. हर पेरेंट पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को सही संस्कार, सही मार्गदर्शन दें. लेकिन मेरे बच्चे वाकई बहुत ही समझदार हैं. अभी तो मैं उनसे सीखता हूँ बहुत सारी चीजें. How to be politically correct in what you say, what you think, and they correct me on so many things. So वो देखिए क्या है कि चलो they have their life path also set. मेरा जो बड़ा बेटा है, in fact he's leaving tonight. He's going to LA, USC. He studies over there. He's doing a course in the business of music, where they teach Wow. music, teach law, they teach digitization, production. It's a full all the course. It's a proper Yeah. education system. the whole IP of music, the entertainment, laws and things of music. So वो पढ़ रहा है साथ साथ. बहुत बड़े कंपनी में as an intern. He's working for the Oh my second year now. God. Does he know he's So Shaan's son? no, he's very happy to be Soham. He does interviews without even mentioning to them that he's my son, and I think Oh that my is God. amazing about him. वो जो कुछ भी किया है as a producer, as music producer, he works, but he works with a whole different set of people. His music is totally different. Person, musician, very proud of him. Wow. हाँ, मेरा जो छोटा है वो तो मतलब rock star है. And we just had a huge party last night celebrating his contract with one of the biggest music companies of India.
Wow. And his contract is bigger, better, stronger, brighter than all my contracts put together into 100. What are you saying? Yes, it's one of the greatest contracts ever made in the music industry. Wow. And I'm so proud of what has happened with him. And I know he's got his head on his shoulders. तो बहुत ही वो मेहनती लड़का है, बहुत ही होनहार है, Humble बहुत है. ही टैलेंटेड तो है ही, लेकिन बहुत मतलब नजर नहीं लगना चाहिए, बस बहुत ही कमाल करने वाला है. बहुत जल्द मेरी पहचान यही होने वाली है. हाँ, you'll be known सोहम और as शोहम के Soham's पिताजी. father. Yeah. That's how it's going to be, and I'll be very proud about that. Oh, we are so happy to know that. But Shaan, before I let you go, very quick rapid fire with you. The actor for whom you sang, you enjoyed the most. And be really there, huh? No diplomacy. नहीं नहीं नहीं, अभिषेक बच्चन, I've sung a lot of songs for him, and सैफ, बहुत सारे सैफ के मेरे गाने गाए, बहुत सारे हिट गाने हुए हैं. So these are the top two. I mean, people Who would would you think want Salman to? Khan, people would think Shah Rukh Khan, but I've sung more for Saif Ali and I was Abhishek. about to say Shah Rukh Salman नहीं बोला आपने. हाँ, मैंने उनके भी काफी आइकॉनिक, जैसे Hold On या फिर You're My Love, वो सारे गाने तो काफी जो टिपिकल जो उनके शोज में वो परफॉर्म करते हैं. आमिर खान के लिए चांद सिफारिश जो करता हमारी. My favorite. I managed to get all the you know जब से तेरे नैना for the double opening song for Ranbir. तो काफी आइकॉनिक गाने मिले हैं, so I'm happy. Which kind of industry you would want to work? Like, I mean, Bollywood, Hollywood, English tracks, South movies. Which language you want to sing if given a choice? मैं like I told you, जो जहां मुझे बुला ले मैं वहां पहुंच जाऊंगा. आप बुला लीजिए, मैं आपके लिए गाना गाऊंगा. I just want to sing. I just want to sing. Any language, any genre. But कुछ फेवरेट है? साउथ का टोन पसंद है मुझे, हिंदी पसंद है, इंग्लिश ट्रैक्स पसंद है. नहीं, challenging होता है. I love challenges. Which has been the most challenging for you? Let me get it that. Singing languages, जैसे तमिल गाना गाते हो, I could almost get a migraine sometimes, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा है मुझसे यार. और वो, so we've had some very long grueling sessions singing Tamil songs, but yeah, that's very challenging. And last but मजा one, आता है. which is your recent or not the recent, which is your most favorite song? शान का favorite song क्या है? नहीं, ऐसा तो कोई favorite गाना है नहीं जो मेरा favorite गाना. At present क्या है? What are you listening in loop? वो होता है ना, मुंह पे गाना चढ़ गया. At present तो मैं actually Independence Day था, तो मुझे काफी सारे नए गाने सीखने थे. तो मुझे I saw your show. वतन वतन मेरे आजाद आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन. ये गाना एक सुरूर सा चढ़ जाता है. और the words are so strong and powerful. इस गाने को गाकर सीख कर मुझे बहुत मजा आया, परफॉर्म करके बहुत मजा आया. Shaan, you mentioned your mama now. You mentioned your mom, so it just struck me. Is there a moment you want to share about her? My mother has been with me from the very, obviously, कोई नई बात नहीं, but कोई एक किस्सा होता है ना जो हमेशा, मेमोरीज तो इतने बनते हैं सबके साथ, बट एक वो फ्लैश में बहुत स्ट्रांगली कोई आपको आता है, उनका कुछ बोला हुआ आपको जो आपको याद है. माय मॉम यूज्ड टू से दिस. नहीं, देखिए, अब I was really hoping कि मतलब जब तक जिंदगी है मम्मी रहे मेरे साथ, मैं मम्मी के साथ रहूं. लेकिन इस बात से मैं काफी खुद को सांत्वना देता हूं कि हर एक दिन, हर एक पल मैं मम्मी के साथ ही रहा. बचपन में भी ना कहीं हॉस्टल गया या कहीं और. I've always been at home and I've always been with my mother. शादी के बाद also I feel so blessed that my wife and my mother made a wonderful team. Wow. और कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि मम्मी को कहीं मम्मी से दूर जाके रहना है या अलग रहना है. और जब से वीडियो कॉल बना तो जहाँ भी जाता दिन में 2 बार वीडियो कॉल्स भी करते रहते थे. कोविड का ये जो 2 साल था तो बहुत साथ में गाने गाए. Wow. बैठे रहे, बातें करते रहे, लूडो खेलते थे बहुत. मम्मी हार जाती थी तो भड़क जाती थी मेरे ऊपर. बट वरना तो she was the most smiling, the most, जो भी मैं ये स्माइल करते रहता हूँ, ये इससे 10 गुना ज्यादा मेरी मम्मी की स्माइल और भी ज्यादा प्यारी थी. और जो भी उनसे मिलते थे कभी उन्हें भूल नहीं पाते थे. और बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही जैसे कहते हैं ना, एक गहरी सोच थी उनकी. आई रिमेम्बर वंस, एक आप कह रहे कोई बात उन्होंने मुझे बताई, बहुत सिंपल बात बताई. तो वो टीवी देखते रहती थी, उनकी बंगाली सीरियल चलते रहते थे, उसमें कभी कोई ऐड आया, कोई गाना आया, और मैं कहता था कि देखो हर कोई गाना गा रहा है, तुम्हारे बेटा एक घर पे बैठा है, गाने नहीं मिलते हैं, ये है वो है करके ऐसा कुछ कंप्लेन कर रहा था उनको फालतू में. तो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही है, बोले हो गया ऐसे क्या.
तो बोले और कितना चाहिए, इतना मिला है, यू नो बी बी सेटिस्फाइड। बार बार ये करते रहते हो कि और चाहिए और चाहिए, जिंदगी में ये कभी खत्म ही नहीं होगा। बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू गॉट। Did तो you learn? उस दिन से मुझे वो उस चीज की एहसास, आई यू नो आई फेल्ट दैट yes, I have to have gratitude. I can't keep asking. I have to, you know, I can't keep complaining. I have to be Did you feel like, happy. Shaan, everybody's in this loop और चाहिए, जहाँ पहुँचना है पहुँच के और कुछ, but they don't know they've already reached. मतलब it's an unending True, loop. true, true. This generation हाँ. is lost into it, but you feel, because it's not about how much you achieved already, but still people ask you, आज क्या कर रहे हो? अब क्या चल रहा है? It's just not ending. So you find it funny now नहीं, when I people think say, वो अपना ही गाना था ना, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। तो बस चलना जरूरी है। और ये नहीं कि आपने उससे क्या हासिल हुआ आपको, या आपने क्या अचीव किया, लेकिन वो कोशिश की कुछ ना कुछ नया, नया दिन है, कुछ नया करते हैं, कुछ और करते हैं। क्योंकि एक बार वो रुक गई तो फिर बात ही रुक जाती। तो फिर हम वो कल क्या हो गया, परसों क्या हो गया, उसके बारे में सोच सोच के जिंदगी बिताना, मुझे तो ये पसंद नहीं है। but तो आई जरूरी डोंट भी है रीड ना एनी हर दिन बुक। विक्ट्री आए अपने पास, नहीं so नहीं, they do विक्ट्री it. विक्ट्री कहाँ आएगा? विक्ट्री तो आना असंभव है, डजंट हैपन लाइक दैट। बट हर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी चाहिए। I cannot leave this, but I have to touch upon KK because it happened in Calcutta, and everybody was so diehard fan. I was so lucky to have seen him live concert. How is your memory with him? I'm sure he was your. Were you guys friends? How were you known to each Yeah, other? Or just colleagues? I think I could definitely believe that I was his closest friend among singers, and because we spent a lot of time together. KK being a very private person, wouldn't attend parties, wouldn't Oh, attend really? you know, birthdays, dinners. तो एक आध जो भी अटेंड किए होंगे मेरे ही, और वो भी बहुत साल पहले। लेकिन हम लोग साथ में बहुत शोज किए, ट्रैवल किया। यू फ्रॉम कोलकाता, वी परफॉर्म्ड इन Yeah. वेस्ट बंगाल इन अ सर्टेन टूर, यारी टूर, जो आसाम में भी हुआ, बंगाल में हुआ, उड़ीसा में हुआ। फिर हम लोग दुबई में हैट्रिक कंप्लीट किए टुगेदर, शान के हम लोग ने 3 शोज किए, 3 इयर्स बैक टू बैक, 2017, 18, 19। तो बहुत सारे गाने गाए साथ में, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में मिलना। तो वी हैड अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम टुगेदर। हमेशा कहते थे कि इस बार मिलेंगे, फैमिली के साथ मिलेंगे, यू नो, बट वो होती नहीं थी वो बात, रह जाती थी। बिकॉज किसी को चांस मिलते ही, यू नो, ही गो ऑफ टू हिज फार्म हाउस इन देवलाली, और फोन वोन बंद करके चुपचाप रह जाता था। तो कोई एक मेमोरी उनके साथ आप जो बहुत ट्रेजर करोगे? लास्ट तो हम लोग कपिल शर्मा शो पे मिले, और दैट वाज जस्ट 3 months बिफोर वी लॉस्ट हिम, मे बी इवन लेस, जस्ट 2 months, या। So, but of course, we would, you know, meet and catch up from wherever, you know, we leave things. And I lost my mother by then when I met him, and so वही कह रहा था कि he was saying that, you know, okay, we have to live for those who are there, yeah, bro. क्या करें? You know, because you know, he had also lost his parents, so he was saying we have to live for our family now, ना। तो मुझको चार्ज कर रहा था, और साथ साथ of course बहुत सारी बातें हम लोग तब कैजुअली बातें करते, थोड़ी कभी पता चले Yeah, कि, you know, you just this is stay the in the last time we're moment. going to meet. Yeah. तो he was always looking so fit, looking so, मैं बोला यार तू कुछ स्टॉप ऑर्डर लेके बैठा है, उम्र होती ही नहीं है। So हंस रहा है, हाँ बस हंसते हंसते यार, और क्या करना है, जैसा बड़ी सी, नो नो, आई एम इंस्पायर्ड बाय यू। उस दिन तू आधा रोटी खा रहा था, मैं देख रहा था। ऐसे मैं कब आधा रोटी खाया, बट एनीवे, सो या वी आर, यू नो, वी आर अ वेरी 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 वार्म एंड वेरी easy relationship. You know, there was no judging, there was no मतलब हम लोग दोनों गाना गाते हैं, या वो गाना कहाँ से मिला, ये नो डिस्कशन अबाउट म्यूजिक, सॉन्ग्स, करियर, इट्स जस्ट अबाउट टू फ्रेंड्स हैंगिंग आउट। You never compete, it seems. It's not like you never worried about कौन आगे निकल गया मुझसे. You नहीं don't. नहीं, क्योंकि म्यूजिक में तो वैसे भी उस तरह का रेस तो होता है नहीं कि एक फिनिश लाइन है और सब कोई पहुंच गया, कोई नहीं पहुंचा, ये चलते रहता है। But yeah, KK was someone that, you know, of course, we lost a lot of musical greats in the last 2-3 years. Papita, of course, Lata ji, Bhupendra ji, such wonderful artists. But KK का जाना, एक तो हमारी दोस्ती बहुत करीब की थी, हम लोग साथ में शुरू किए। He was like one of us from our generation, someone to go so early. It really was terrible, and he was at the peak of his singing, his performance Totally. as This a is no person. age. This is no age. Today we No see way. Yeah. early time people. We have lost a lot of artists in that age. बट यू नो, आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप काफी सुनकर ताज्जुब हो जाएंगी कि रफी साहब भी, we lost रफी साहब at the age of 54.
around the same age, yeah. Yes. But उस जमाने में लगता था कि नहीं यार वो तो मतलब काफी शायद Yeah. बुजुर्ग थे. But today it seems no age. Today a 50 seems like you look like you're 30, so you can't really tell the difference. Mukesh ji was not even 50 when we lost him. Can you imagine that? And he has sung such great songs. Kishoda was all of just 58 when he went. So So do you think is the stress taking on the health? नहीं ऐसी बात नहीं है. I mean, we have other examples of and I think especially जो classical singers होते हैं, strangely mostly they live many many years. चाहे मेरे गुरुजी हो साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब, भीमसेन जोशी जी, और जसराज जी, तो म्यूजिक इज अ वेरी कामिंग एंड आई थिंक जब आप सुर भरते हो, लंबी सांस को आप होल्ड करके गाते हो, it improves your system. It's not about the stress. It's destiny. I don't know क्या कह सकते हैं. KK was the last guy in stress. कभी भी stress was the last thing on him. Has the performance pressure increased then over time? Because the setup or live concerts from the time you've been doing to the present day have it changed a lot? Is there too much of pressure on stage, or it's just the same? नहीं, Right? आज today's new generation have a lot of backing. They have we get lights, we get videography, we get added band members, we better monitoring. हम लोग जब गाते थे तब वो कहाँ बैंड बज रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ. So we've come a long way from there. Today better conditions we are performing at. But of course, then it's each to their own. When I perform, I perform like it's my first and last show. I don't मतलब कल भी शो है, परसों भी है, लेकिन आज अगर मैं स्टेज पर हूँ तो it has to be everything, all or nothing. वहाँ कोई वो परहेज करके खुद को बचा के वो होता ही नहीं है मुझसे, क्योंकि जब I'm having a good time only then will someone enjoy themselves. And आप imagine कि आपके सामने आपकी ऑडियंस है और आप अकेले उनको उनकी पूरी मूड को, उनकी पूरी एनर्जी को आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे आपको तो आपकी जी जान सब कुछ आपको डालना ही है. यू हैव टू विद दैट सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट दे हैव अलाउड यू दैट. सो वहाँ आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं. के इस हादसे के बाद कई मैसेजेस आए हैं कि यार तुम बहुत ज्यादा जंप करते हो स्टेज पर, ये करते हो वो करते हो, अब ये सब करना कम कर दो. एक उम्र के बाद वन शुड बी मोर ऐसे. व्हेन आई फील इट आई विल डू इट. फिलहाल तो ऐसी आई एम फीलिंग एज एनर्जेटिक एंड एज एक्साइटेड. लेकिन yes, I did do a checkup. My children insisted. I was out. I was मिक्का दी बोटी वो शो में होस्ट कर रहा था, जोधपुर में था जब ये हादसा हुआ. I came back to Bombay, did a full body checkup. So it's all good. It's all good. We have people sitting around. If anybody has a question, you can put through. I have someone from Bombay, Komal. I have Yash. So any questions, just put through before we let this amazing man go. मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है. मैं तो चाय मंगा के बैठ रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ I कि just आप don't want to let this जिस moment तरह go, shy but we have to coffee go. somewhere. I swear, I can't let you go. The moment you start singing, I'm like, Lena, stop asking questions. Hi Komal. Hi. So I want to ask you, जी. how do you think the sustainability of the singers in the music industry over the years, do you think it has become more difficult? Yes, definitely, because singers are not as singers can very easily today be substituted. There are very few singers who have that, just the maybe top 4 or 5. Your Arijit Singhs, your Shreyas, Sunidhis, who hold that kind of clout that उनके बगैर गाना record नहीं हो पाएगा. Exactly. But So do you think the music industry is biased? They're not giving new talents more opportunity? No, not at all like that. Actually, what has happened today is that the music industry has spread thin. There are so many different film है, non-film है, OTT, हर तरह की फिल्में हो रही हैं, हर तरह के composers हो रहे हैं. तो and also today singing has become easier. The kind of skill sets that you need to be a singer is not as rigid as it used to be earlier. So I think it's opened up a much more. I think even 10-15 years ago when few of us were ruling the roost, you could have said that there was a bias, कि हमसे ही सारे गाने गवाते रहते थे. लेकिन अब तो हर किसी को बहुत मौका मिल रहा है. Okay. Thank And you. we are twinning, Komal. Yellow. Happy Gokulashtami to you. Same to you. Thank you. Thank you, Komal. Shaan, please leave me with a song. You've sung so many for me, but one dedicated to KK for sure, because we have remembered him and you've shared your moment with him.
तो एक गाना उनके लिए और एक हमारे लिए. हमारी दोस्ती पर ही गाना करता हूँ फिर. True. यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार. Beautiful, man. तो One for the हमारे Bengal. shows में I used to sing this song and KK used to sing Tanha Dil. Wow. One for Bengal. Because I'm One from for Bengal. Bengal, I'm representing, yeah. Of course, of course, of course. You And can I do have a strong Bengali. home connection, though I'm born brought up in Mumbai, but both my parents are from Calcutta. Yeah. Bangali chile, Bangla গান তো করতে হবে. Challenge. I think this is probably one of my most popular songs, and during monsoons it gets even more popular. So, রিমঝিমে ধারাতে চাই মন হারাতে, রিমঝিমে ধারাতে চাই মন হারাতে, এই ভালোবাসাতে আমাকে ভাসাতে, এলো মেঘ যে এলো ঘিরে বৃষ্টি সুরে সুরে শোনায় রাগিনী, মনে স্বপ্ন এলো মেলো, এই কি শুরু হলো প্রেমের কাহিনী, রিমঝিমে ধারাতে চাই মন হারাতে. Lovely, Shaan. I wish I knew the meaning though. But मैं बंगाल से हूँ, बंगाली समझती हूँ, but इतना अच्छा नहीं समझ पाती. But नहीं, ये your बहुत voice. सिंपल है. रिमझिम में धाराते, आप समझ रहे हैं कि रिमझिम के बारिश में दिल चाहता है कहीं खो जाए और तुम्हारे तुम्हारे प्यार में कहीं खो जाऊं. It's beautifully composed by Jeet Ganguly, one of the most पिछले 15-20 साल से I think he's the most prolific composer in Bengal, along with Bollywood. तो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और उनके लिए बहुत सारे मैंने बंगाली गाने गाए हैं. But this one probably is the most popular one. Lovely, Shaan. It's my moment. I am so amazed to have met you, to get your voice and your story through India Podcast, and all the best for all the new songs that come around. We would like to meet you in person very, very soon. I think India Podcast will come around shooting in Bombay soon. Sure, we would would like love to that. do a lot of work with you in different capacities and stay in touch with you. And thank you so much for this moment.